सीएचएसई एग्जाम 2020 रे +2 साइंस रे डाफोडिल रू एक पैसेज आसथिला। रिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 रे 30% सिलेबस कमी गला परे पुणी थरे डाफोडिल्स रू एक पैसेज सीएचएसई एग्जाम 2021 रे +2 आर्ट्स किंबा कॉमर्स रे आसी पारे। हेलो स्टूडेंट्स, आजिर वीडियो को समस्त +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश रो डाफोडिल्स पोएम रो एक पैसेज रो प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। समस्ते रेडी तो ताहले आउ समय नष्ट न करी क्लास आरंभ करिबा। ओके, दिस इज an extract of the poem Daffodils. एथिरे तीनोटी स्टांजा अछि। प्रथम स्टांजा टी पढुछि। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought. For oft, when on my couch I'd lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Poem टुकु आमे पढ़ी गले। पोएम को आगु आम बहुत थर बुझे आगु मुझे गोटे क्लास करी पोएम को ढेर थर बुझे तेणु आउ पोएम को बुझौनी आम क्वेश्चन पाक डायरेक्ट जाऊँ। प्रथम क्वेश्चन टी अच्छी आई रे, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स। डबल ए रे अच्छी, व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। ट्रिपल आई, what impact did the dancing daffodils have on the poet? Ivy in such a jocund company, what constituted the jocund company? Virati, they flash upon that inward eye. What does inward eye imply? पांचटी जो प्रश्न आम देखिले। प्रथम प्रश्न उत्तर आम बर्तमान देखा कौ पाखे अच्छी। प्रथम प्रश्न अच्छी आई रे, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स। ताले एई प्रथम स्टांजा रे अछि, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. এই চারিটি লাইন ভিতরে এই প্রশ্নর উত্তর আছে। হোয়াট ইজ দি সিমিলারিটি বিটুইন দি স্টার্স এন্ড দি ড্যাফোডিলস। তারা এবং ড্যাফোডিল ভিতরে কোন সিমিলারিটি রয়েছে, কোন সমানতা রয়েছে। এইটা অ্যাকচুয়ালি আনসার। দে স্ট্রেচড ইন নেভার এন্ডিং লাইন, কন্টিনিউয়াস এজ দি স্টার্স দ্যাট শাইন এন্ড টুইঙ্কল অন দি মিল্কি ওয়ে, দে স্ট্রেচড ইন নেভার এন্ডিং লাইন। এই তিনটি লাইন ভিতরে ଅଛି। এইটি एक्चुअली এইটা তার आंसर, দে স্ট্রেচড ইন নেভার এন্ডিং লাইন। তাକୁ টিকে সজাইকি লেখিবা, প্রশ্নରୁ টিকে লেখিবা। কেমতি লেখিবা? দি সিমিলারিটি বিটুইন দি স্টার্স এন্ড দি ড্যাফোডিলস that the poet William Wordsworth find while wandering alone along the shore of the lake was the innumerable stars. এইটো actual answer ଅଛି। The
the innumerable stars that shine in the Milky Way and the golden yellow colored daffodils that stretch in a never-ending line along the margin of a bay. It is the similarity between the stars and the daffodils that the poet William Wordsworth find. जो similarity Wordsworth पाइथिले सेटा while wandering alone along the shore of the lake. ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଘୁରୁଥିଲା ବେଳେ କଣ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖିଲେ was the innumerable stars that shine in the Milky Way. ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ତାରା ସବୁ ଯୋଉ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଛାୟା ପଥରେ and the golden yellow colored daffodils. କଣ ସିମିଲାରିଟି ଦେଖିଲେ that stretch in a never ending line. Stretched in a never ending line along the margin of a bay. Eight actually answer. तब द्वितीय प्रश्नटी देखिबा where did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? कोठी से daffodil को देखिले एक्चुअली तार आंसर एटा हबो along the margin of a bay. Along the margin of a bay. एटी बे माने कोन लेक एटी ह्रद को बुझाउची बे माने मार्जिन ऑफ बिसाइड द लेक मार्जिन माने कड़रे बा साइड रे तेणु एठी कोन हेची along the margin of a bay एटा आंसर हबो ताको सजेई के लिखिबा while wandering alone along the shore of the bay the lover and worshipper of nature William Wordsworth saw a host of golden daffodils beside the lake and beneath the trees. While wandering alone along the shore of the bay, the lover and worshipper of nature William Wordsworth saw a host of golden daffodils beside the lake and beneath the trees. आमर एक्चुअल आंसर सहित आउ टिके जोड़ी दिया while wandering alone along the shore कूଳରେ ଘୁରିବା ବେଳେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ସେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ କଡ଼ରେ ଘୁରୁଥିଲା ବେଳେ the lover and worshipper of nature William Wordsworth ଏତିକି ଯେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ ଏବଂ एक्चुअली आंसर कोन एठी saw a host of golden daffodils एठी host माने गोष्ठी बा अनेक गुडिए host of golden daffodils beside the lake and beneath the trees हृद कूଳରେ एवं गछ तळे देखिले बर्तन देखा ट्रिपल आई क्वेश्चन देखिबा ट्रिपल आई व्हाट इंपैक्ट डिड द डांसिंग daffodils have on the poet व्हाट इंपैक्ट डिड द डांसिंग daffodils have on the poet कवि को ऊपर डांसिंग daffodil रो कोन इंपैक्ट पडिथि यार आंसर देखिबा एठी आंसर अछि एथिरे अछि ए लास्ट स्टांजर अछि ए लास्ट रे अछि एटा इंपैक्ट ता ऊपर ताका ऊपर पडितिला which is the bliss of solitude and when my heart with pleasure fills and dances with the daffodils एटा ताकर इंपैक्ट थिला ताको सजे के लिखले कोन हबो when the poet remembers the sight of the daffodils when the poet remembers the sight of the daffodils कवि जेतेबेले मने पकांती से दृश्य को he immediately discovers himself in the midst of the charming golden colored flowers जेतले मने पकांती ताको मने हुए से जेमती गोल्डन कलर्ड daffodil फ्लावर मध्य रे से अछंती भीतर अछंती गहन रे अछंती फूल सहित अछंती डांसिंग इन द कूल ब्रीज his heart fills with endless pleasure ताकर हृदय
असीम संतोष संतुष्ट रे भरी जाए खुशी रे भरी जाए and he goes on dancing with the dancing movement of the attractive flowers ताकर हृदय नाची जाए से फूलर dancing movement सहित 80 answer when the poet remembers the sight of the daffodils he immediately discovers himself in the midst of the charming golden colored flowers dancing in the cool breeze. His heart fills with endless pleasure and he goes on dancing with the dancing moment of the attractive flowers. Number I भी देखिबा. In such a jocund company, what constituted the jocund company? एहीपरि एक jocund company ଜକାଣ୍ଡ कंपनी कहले जे हर्षोत्फुल्ल मुहूर्त जो थिला खुशी मुहूर्त थिला कौन कौन मिसी जकांड कंपनी हेतिला बोली कवि कौन प्रश्न रे अछि कौन कौन मिसी जकांड कंपनी हेतिला एठी देखिबा आईवी रे आंसर देखिबा कोठी अछि A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed. Later the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. 80 answer टी अछि तले कोन अब आंसर आमे ताकु टी सजै के लिखिबा jocund company refers to merry or enjoyable company or associate of nature. Jocund company refers to merry or enjoyable company or association of nature. The waves of the lake and the golden daffodils dancing gleefully, producing a pleasant sight, constitutes the jocund company. Jocund company एटी का कहछि merry बा एक खुशी रो मुहूर्त बा enjoyable company और association of nature प्रकृति सहित जड़ित the waves of the lake and the golden daffodils हृदर wave बा ढेउ आउ सुनेली daffodil एका संगे जो नाचन dancing gleefully producing a pleasant sight कवि कहते एक pleasant sight सृष्टि हेती pleasant दृश्य खूब सुंदर दृश्य constitutes the jocund company एटा को कहा होची jocund company एथरे के रहले ताले waves of the lake golden daffodils ए दुई जनकर मिसी की jocund company ची poet को पई ओके ताले jocund company refers to merry or enjoyable company or association of nature. The waves of the lake and the golden daffodils dancing gleefully, producing a pleasant sight, constitute the jocund company. Number B देखिबा they flash upon the inward eye. Number B they flash upon that inward eye. What does inward eye imply? What does inward eye imply? Inward eye कौन माने कौन बुझाउची यार आंसर देखिबा हियर inward eye एथिरे अछि they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. The inward eye answer देखिबा the here inward eye implies the spiritual insight of mind's eye. If we contemplate anything in our mind's eye, we can get a clear-cut idea of it even in their absence. Here inward eye implies the spiritual insight. गोटे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कुहाइछि मनर आखिरे mind's eye. Here inward eye implies the spiritual insight of mind's eye. If we contemplate anything in our mind's eye, मनर आखिरे, we can get a clear-cut idea of it
even in their absence. ओके ताले 5टी जाक प्रश्न आम आलोचना कले एटा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज सिलेबस अनुसार 2021 मसीहा सीएचएससी एग्जाम 2021 पे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्ट्स साइंस कॉमर्स कहा पय आसीबो कहि हेबनी किंतु आसीबा संभावना यथेष्ट अधिक आको टिके भलो रेडी हेबे ओके वीडियो टी केमती लागिला कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे जदि भलो लागिला लाइक टे करिवे जो माने प्रथम थर पय आज ए वीडियो वाच करचंती तांको जदि भलो लागिला लाइक टे करिवे एवं एही परि वीडियो देखबा जदि चाहती एवं पाठ अधिक नंबर रखिया पय चाहती तेबे ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन को क्लिक करिवे जेपरि कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन सेमानक पाखु सबट आगे पहुंचीबो धन्यवाद जोटी थांतु भलर थांतु सुखरे थांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।